दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लॉयर्स में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि वुमेन के बारे में। आज हम लोग जो कोई लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द वुमेन्स और वुमेन राइट्स। ओके, फॉर ईयर्स लाइक वुमेन हैव बीन डिनाइंग फॉर द बेसिक ह्यूमन राइट, the right of education, the right of equality, the right to be heard, and they were only associated with the men कि आदमियों को ये राइट मिल रहे थे, औरतों को नहीं मिल रहे थे. They were denied basis of the human right and forced to live with the state of subjugation and deprivation. So in earlier time, the ancient Greek had great power in the society, and like in Athens, the most influential group often disregarded women. They were excluded from society and had no political and personal right. Today, the situation for women may not be that much bad as it was earlier. However, women in our society still face discrimination. ये मेन बात है. हम लोग आज केस लॉज डिस्कस करेंगे, फूलवती वर्सेस प्रकाश 2016. बेसिकली हम लोग ये केस डिस्कस नहीं करेंगे, बट दिस वाज द अर्लियर केस लॉ विच इज ओवर रूल्ड बाय विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. Okay, 2020. The only issue have been raised in the Fulvati versus Rakesh Prakash in 2016. Hindu Succession Amendment Act 2005 will have retrospective effect. The implied judgment, the Fulvati versus Prakash plea of retrospectively has been upheld in favor of the respondent by the appellant and aggrieved. ये था इस केस में हुआ था फूलवती वर्सेस प्रकाश. नाउ द प्रोविजन फॉर द वुमेन इक्वलिटी एज फॉलोज. कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ आज वुमेन इक्वलिटी के लिए कुछ प्रोविज़न हैं, उनकी मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ. आर्टिकल 14 यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. लाइक इट्स फॉर ऑल. Okay, like it's for every citizen, every person, we can say the article 14's work. Equality before the law and equal protection of the law. Now article 15 prohibit discrimination on the same ground. Article 15 में हम लोग बात करते हैं कि ये discrimination को रोकता है on the same ground, like किसी की वुमेन के साथ में किसी के साथ में discrimination नहीं होना चाहिए. Article 16 बात करता है equal opportunity for women in the state office, and article 42 just and human condition for women. Work condition women के लिए होनी चाहिए. And article 325 and article 243d clause 3 and 243d clause 3 include the political right available to women. Article 325, 243d clause 3, 243d clause 3, these all give the political right to the woman, right? And section 6 जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, basically section 6 is the Hindu Succession Act was amended in year 2005. The Hindu Succession Amendment Act 2005 stated that daughters have the equal right to the property in respective to living status of person who have owned the property. Just as the right of a son, a daughter too is entitled to the coparcenary right. Okay. Now section 6 of Hindu Succession Act क्या कहता है, ये भी एक बात देख लेते हैं. The act was amended in the year 2005. The Hindu Succession Amendment Act 2005 stated that daughters have the equal right to the property in respective of the living status of the person who owns the property. Just as the right of his son, a daughter too is entitled to coparcenary right. Now next हम लोग जो केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा. A co-partner share equal right in a property or in a joint heir. According to the Hindu Succession Act 1956, a Hindu become a co-partner and has equal right to ancestral property by birth. Supreme Court ruled in the landmark case of Vineeta Sharma that women entitled to co-partnership right from the moment they are born. It was also held that father's death would not affect the co-partnership right of the appellant. The judgment overruled the earlier judgment of Prakash versus Fulvati and Mangamal versus T.B. Raju.
सो इन जजमेंट को, इस जजमेंट ने ओवर रूल किया. अब फैक्ट ऑफ द केस हम एक बार बात कर लेते हैं. द appellant विनीता शर्मा filed in case against her family member including brother Rakesh Sharma for a share in the family ancestral property. The father, Mr. Dev Dutt Sharma, had passed away before 9 September 2005. The High Court of Delhi held the appellant could not claim the property as the 2005 amendment of the Section 6 of the Hindu Succession Act 1956 letter in appeal filed in the Supreme Court. So fact in the issue, so यहाँ पे दो fact in issue थे जो कोर्ट को डिसाइड करने थे. The first issue is that whether a daughter can claim coparcenary right according to the 2005 amendment when father is not alive. सो यहाँ पे जो फर्स्ट इशू था ये था कि क्या एक डॉटर को पर्सनली राइट क्लेम कर सकती है एज पर 2005 अमेंडमेंट व्हेन द फादर इज नॉट अलाइव, जब फादर जीवित नहीं है तब. एंड वेदर द अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 6 इज रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव. सो ये दूसरा क्वेश्चन जो डिसाइड करना था कोर्ट को. सो दैट वाज द इशू. सो जजमेंट जो आया, अब जजमेंट की बात कर लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैल्ड दैट द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. इट वाज हेल्ड दैट द डॉटर हैड द इक्वल राइट to the property by birth. Earlier, only son were entitled to the right. The judgment put daughter on par with the son. So, जो इस judgment ने daughter and son are equal and they have the equal right regardless of whether the father is alive or dead. The daughter is privileged in her own right. So दैट्स ऑल अबाउट इट. इस जजमेंट में यही डिसाइड हुआ, दोनों इशू डिसाइड किए गए कि डॉटर हैव द इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी. इफ फादर इज अलाइव और नॉट अलाइव, दैट डजंट मैटर. सो कोर्ट डिसाइड द gave the judgment in the favor of the appellant, and this is all about it. So thank you for watching the video. Like, comment and share and subscribe the channel. Thank you very much.